Welcome dear students and learners. Welcome to Coding Asan hai. Today's agenda is first program in VS Code. Okay. Last classes में हमने सीखा how to just install download this VS Code. Okay. Then what is the setup and the first screen. Now today I'll be explaining you for I'll be having like एक language को पकड़ेंगे हम है ना. So we'll just learn what installation and extension and running our first program. So today I am going to use what Python, right? Okay, this is the first screen which you usually see ना when you open Visual Studio Code. Now यहाँ पर मैंने already बना कर रखा है, but of course you can create a new folder. Okay, so I have already created a folder Python, right? So I have selected that. Okay, now I'll simply do a new file. You can also have this new file here, or you can have this new file here, whatever. Since I'm going to make the first program of Python here, okay, so I'll click on new file, then it's Python. If you want something other, you can search for it, okay, some other language. Now because I have chosen Python, I need not write more than 2 lines. Print, okay, hello world, right? And we don't need semicolons and all. Okay, तो tutorial I'll be having the tutorial मैं बनाऊंगी Python पर, है ना? And then next for all other languages also. Hello again, right? And see, I am going to run it. And you are not going to, अभी आपने अगर ट्राई कर रहे होंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये आपके में मे बी ना आ रहा हो, है ना? फर्स्ट आई एम गोइंग टू रन इट. ठीक है, तो it's asking me to save it. Okay, so I'm going to save it as like first, and it's already selected as type Python, तो Python नहीं करना है, सेव करना है. Now I am going to run this, and the output कहाँ आता है? Output यहाँ आती है ना? And see, two times मैंने क्लिक कर दिया. So what is this? hello.python, है ना? ये आप देखिए पाथ है जहाँ पर वो फोल्डर सेव्ड है, and then this is hello world. Like I didn't explain you about the extension. तो first ये तो रन हो गई, बट आपके सिस्टम में रन नहीं होगी जब तक आप एक्सटेंशन नहीं रखोगे, हो ना? सी दिस वन इज़ द थिंग. एक्सटेंशन के लिए वी हैव दिस वन. आई एम क्लिकिंग ऑन दैट. ओके, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. एल्स यू कैन सर्च फॉर इट इफ यू आर हैविंग इंटरनेट कनेक्शन. You need internet connection for this. See, you don't need this Pylance. If currently you need only this Python, you'll search for this. Like ये आप देख लो, है ना? सेम चीज़ को आपको ढूंढना है ना? And Python extension for Visual Studio Code. See, and the documentation is here. Okay, and see, I have already installed it, so it's giving me option uninstall. You will first download it and then install it. Whole process will be here itself. आपको कहीं बाहर जाकर इंस्टॉल नहीं करना है, या कुछ भी बाहर से डाउनलोड अलग से नहीं करना है. जो भी है विजुअल स्टूडियो कोड में ही होगी. ठीक है, ओके. सो ये आप डाउनलोड करके देखोगे. प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स. ओके, किन्हीं को कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आई बी देयर टू सॉल्व दोज. ओके, तो सिंपली आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, कि एक्सटेंशन आप डाउनलोड करना जानो, बिकॉज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ करना है अगर विजुअल स्टूडियो कोड में, है ना, रन करना, तो यू विल नीड दैट. एंड ये फर्स्ट डॉट पाई जैसा हमने बनाया. ओके, लाइक आपको C++ के लिए बनानी है, लाइक आपको जावा के लिए बनानी है, तो यू विल नीड डिफरेंट थिंग्स फॉर दैट, डिफरेंट एक्सटेंशंस फॉर दैट. लाइक सी रिकमेंडेशंस भी बहुत सारी है आजकल जो भी यूज़ हो रहा है. मेनली बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर ही रह जाएगी जब तक आप उसमें एक्सटेंशंस ना डालो किसी लैंग्वेज को रन करने के लिए. ओके, अब आप इसे ट्राई करो, एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ डू कमेंट. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग.